अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट मैनुअली कवर करने जा रहे हैं। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट भी तकरीबन उसकी कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन बिल्कुल वन सैम्पल टी टेस्ट की तरह है। जैसे कि उसका फॉर्मूला, फॉर वन सैम्पल वी वर कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, single population mean. Here we are calculating the mean of difference, so I am writing it mu d. Then since there is d, so we have d bar minus t alpha by 2 and standard error, then d bar plus t alpha by 2 with standard error. In one sample t test हमारे पास यहाँ पे x बार था क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल x था। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में हमारे पास d बार है क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल d है। वी विल बी वर्किंग ऑन दी कॉलम ऑफ d. वी हैव दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 261, दैट इज एग्जाम्पल 7, एंड हेयर वी हैव द डाटा. सो इस फर्स्ट कॉलम को प्रोग्राम मटेरियल की वैल्यूज़ को लेक्चर्स की वैल्यूज से माइनस कराया, लेक्चर्स की वैल्यूज़ को प्रोग्राम मटेरियल की वैल्यू से माइनस कराया, एंड वी हैव द कॉलम ऑफ डी. इस कॉलम को मैंने कैलकुलेटर में एंटर किया ऐसे. जब ये कैलकुलेटर में मैंने एंटर कर दिया, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं. 10 वैल्यूज़ आर एंटर्ड. देन आई क्लिक्ड ऑन AC, then we have shift 1 4 and then 2 for mean equals to, we have mean is minus 1.6. so I wrote it here. Okay, this is my data, example 7 data. D bar equals to minus 1.6. Then we have to calculate S, that is the standard deviation, and N is 10 because there are 10 pairs, if you can see that. So these are 10 pairs and we have N equals to 10. So the degree of freedom will be 10 minus 1, that is 9. We have to calculate S, so let's move here. Shift 1 4 and then again 4. On the fourth option x sigma n minus 1, या आपके पास आएगा sx. So this n minus 1 or s shows sample. Since we are focusing on sample and covering the topic of paired sample t test, so we'll be having a standard deviation of sample 4 and then equals to, we have standard deviation is equals to 6.38. so I wrote it here, 6.38. Same as one sample t test, we have point estimator, which is known as d bar in this case. Then we have standard error, that is s upon root n. Then we will calculate the value of t alpha by 2 from Excel. Then we have estimating error. The fifth requirement is lower limit. The sixth requirement is upper limit. So we have calculated d bar, that is minus 1.6. Standard error is 6.38 divided by root 10. So let's calculate this. Equals to square root of 10.
equals to 6.38 divided by this, the upper cell, equals to, answer is 2.01. This is the standard error, so I am writing it here, 2.01. Then we have T alpha by 2. So again I move my mouse to this cell, equals to TINV, tab, and then I click on fx. So it asked me two things, एक probability, so this is 0.05, and then degree of freedom, that is 10 minus 1 is 9, so T alpha by 2 is 2.262. So I write it here, 2.262. Estimating error is 2.01. This second requirement, multiply by 2.262. Estimating error equals to standard error multiply by T alpha by 2. Second requirement multiply by third requirement equals to fourth requirement. So I am calculating these two, 2.01 equals to 2.01 multiply by 2.262. Answer is 4.56. So I wrote it here, 4.56. Now lower limit is minus 1.6 minus 4.56, and upper limit is minus 1.6 plus 4.56. Now let's calculate these two. Equals to minus 1.6 minus 4.56, this is the lower limit, equals to minus 1.6 plus 4.56. So we have lower limit equals to minus 6.16 and upper limit is 2.96, minus 6.16 and 2.96. I hope you understand this video.